me introduce today's guest, Leader Sama Taneja. In 14 years of her corporate career, Leader Sama Taneja worked across sectors like IT, KPO, pharmaceuticals, and has a unique experience blend with of industries and consulting in HR and social innovations. She has held HR leadership role in the past 4 organizations and has been part of executive leadership team reporting to head of businesses. She is now director of Unlimited Unnati, focusing on businesses, coaching for MSME and SME of India. She is a certified MBTI facilitator and a business coach. So leaders, let's welcome Leader Sama. I'm budging the chat box with the I can, I will. Over to Sama ma'am. I can, I will, Rajendra sir. Thank you for the very cool introduction. मैं भी भूल गई थी मैंने क्या क्या किया हुआ है. So thank you for reminding me. Yes, I have worked in the corporate sector for a long time. I worked for about, 2016, about 15 years. Yes, so I worked for 15 years across industries. I worked for multinationals. I worked for some Indian companies as well. And human resources was always a big part of my job. And हमें ऐसा लगता है कि छोटी कंपनी स्ट्रगल करती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, बट ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ स्ट्रगल कहो तो हर कंपनी स्ट्रगल करती है. एंड इफ यू लुक एट इट एज मैनेज करना है तो हर कंपनी को मैनेज करना है ह्यूमन रिसोर्स. बड़े लेवल पे कंपनीज की अलग चैलेंजेस होती हैं, छोटे लेवल पे कंपनीज की अलग चैलेंजेस होती हैं. बिकॉज व्हेन वी कंसल्ट विद द एमएसएमई सेक्टर, आई थिंक अब मैं उन्नति के साथ 8 साल से जुड़ी हुई हूँ एंड वी आर ओनली वर्किंग विद एक्सक्लूसिवली वर्किंग विद द एमएसएमई सेक्टर. मुझे बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि एमएसएमई सेक्टर लीडर्स को लगता है दैट उनकी पीपल स्ट्रगल्स बहुत हैं, बट पीपल स्ट्रगल्स हर लेवल पे हैं और हर लेवल की कंपनी को अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती है. व्हेन आई वाज वर्किंग विद मल्टीनेशनल्स वी हैड आवर ओन स्ट्रगल्स. हमें भी लोग नहीं मिलते थे बिकॉज मल्टीनेशनल्स में भी कंपटीशन है. Should I work for a Hindustan Lever? Should I work for a PNG? Should I work for Danone? And therefore, all the time you had to have strategies to hire people, to retain people, and to make sure that when they leave you with a greater brand credibility. Right? And बड़ी कंपनियों को उन सब चीज़ों की ज़्यादा चिंता होती है. They are more concerned about their public image, how people perceive them in the market. क्या उनको दूसरे लोग मिलेंगे, ऑल ऑफ दिस, कॉलेज में उनकी रेपुटेशन क्या है. सो एटलीस्ट डोंट फील बैड दैट दिस इज योर स्ट्रगल, दिस इज एवरीबॉडी स्ट्रगल. पैसा और लोग, these are two resources which make businesses spin and run, and therefore in दोनों पे constant attention is something that is a high value of the CEO. I will share some slides with you. Can I share my screen, Akash? Yes, ma'am. Okay. So you can see my screen? Okay. You'll have to excuse me for my sniffing and coughing. I have a bad cold. But on the questions, how would you like to do it, Akash? Would you and Rajendra sir, would you like me to take questions in the end, or बीच में भी questions ले सकते हैं? How do you want to do it? In the end of the discussion. In the end, all right. So let me quickly go through whatever I have learned about human resources. और मैंने थोड़ा सा इसको MSME sector के लिए specifically बनाया है, so that we can deal with the challenges that we face at our size. So how do we recruit, retain and relieve, right? सबसे पहले तो बिफोर आई डाइव इनटू दीज टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एंड आई हैव शेयर्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स इन बिल्ड इंडिया सेशंस. योर बिजनेस इज रन ऑन सिस्टम्स एंड योर सिस्टम्स आर रन बाय योर पीपल. बहुत क्लियर एसोसिएशन रिलेशनशिप है. मोस्ट ऑफ द टाइम MSMEs में सिस्टम्स नहीं होते हैं, एंड देयरफॉर वी आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन पीपल. When I say dependent, there is a difference between being interdependent and dependent. The good relationship is of interdependence. You need me and I need you, right? And there is therefore a balance of power.
बट जब आपकी डिपेंडेंसी होती है किसी चीज पे, वो बैलेंस ऑफ पावर हिला हुआ होता है, विच मीन्स इन मोस्ट MSME सेक्टर्स you are overly dependent on a handful of people. Even if you have 50 people in an organization, आपकी संस्था में 5-6 लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे आप completely dependent होते हो उनके ऊपर, and that's because you don't have systems in your organization. So one place to work is systems. बट मैंने ये भी बहुत देखा है कि बहुत सारे MSME ओनर्स को लगता है कि अगर हम सिस्टम्स लगा लेंगे तो हमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी. That is a myth. So you need both. You need processes and systems so that there is a relationship of interdependence between you and your people. But you also need people because people run the systems. Systems अपने आप नहीं चलते हैं. Systems को चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं. And you need the right kind of people to run your systems so that your business runs. Before we move to the technical aspects, or so you say functional aspects of recruiting, retaining and relieving people, एक चीज बहुत I think मुद्दे की है. A lot of us don't realize it, and therefore I think I want to put it that when you are running a business, your business and your life are two separate things. They are two separate entities. But ज़्यादातर मैंने देखा है कि MSME owners में business is bigger than life. So you don't have time for life. You don't have time for things which will matter at 50, which will matter at 60, right? अभी क्या है, business की भाग दौड़ में हम almost हमारा पूरा जीवन निकाल देते हैं. And one of the key reasons for that is that we don't have people in our organization. We have not built a team. Because you need people for both reasons. One is अगर बड़ा होना है, अगर स्केल करना है, अगर प्रोफेशनलाइज करना है अपनी संस्था को, you will need people. दूसरा पहलू है अगर जीवन जीना है, then also you will need people. And there are different scales and sizes of business. मैं नहीं कह रही हूँ कि हम सबको Amazon बनना है, but जिस भी लेवल पे हम खड़े हैं, we need a system and we need people if you want to live your life. Otherwise, you are going to be a 24/7 machine. Your business is going to be bigger than your life. Your business is going to suck your life. जबकि होना बिल्कुल रिवर्स चाहिए. आपकी लाइफ आपके बिजनेस से बड़ी है. लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं करने जैसी. And even in business I'm talking about, if you do not have a team under you, even in business, you're going to be doing the same things every day. And I see this day in and day out in my job. मैं देखती हूँ एंटरप्रेन्योर्स ने 30 साल पहले बिजनेस शुरू किया है, तब भी परचेजिंग करते थे नट्स एंड बोल्ट्स के, और आज भी परचेजिंग करते हैं. तब भी दाना खरीदते थे और अब भी दाना खरीदते हैं. तो क्या बदला? आपकी स्किल सेट कैसे बदली? आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड कैसे हुआ? हाउ हैज योर बिजनेस गॉन टू द नेक्स्ट लेवल? And your business cannot go to the next level unless you go to the next level. And you cannot go to the next level unless you have people at the next level who can take your job. जो 10 साल पहले आप कर रहे थे, आज आपके लिए क्या कोई कर सकता है? सवाल वो है. Not because you want to become an Amazon, but because you want to, one, live a life which is balanced, and second, you want to create a professional organization. और हर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है. When I was thinking about some examples last evening, for example, there is a small eye clinic next to the place where I live in Gurgaon. It's a classic professional business. It's a doctor, yes I know, but it's a professional business. One single man show है. वो खुद आता है, दुकान खोलता है, खुद अपॉइंटमेंट्स लेता है, खुद अपना इक्विपमेंट साफ करता है, एक बंदी है उसके साथ हेल्पर, and that's all, right? And it's a struggle. He has been doing it for 30 years. He has grown old doing it. Next level पे आप देखोगे तो Shroff Eye Clinic है, right? It's an eye clinic. He has many junior doctors. He is one senior doctor. He has a process in the organization. If you go for eye checkup, 5 doctors will see you before you go to the senior doctor, if you need at all. 90% of people go back without seeing the senior doctor because there are junior doctors. और प्रोसेस लगा हुआ है. आप अंदर जाओ क्लिनिक में, 1 2 3 4 आपका फॉर्म भरा जाता है, आपको जूनियर डॉक्टर देता है. अगर जरूरत होती है तो वहीं वो आपको ड्रॉप्स डाल देता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, नहीं तो नेक्स्ट लेवल पे जाते हो.
This is a process organization. Tomorrow, if the senior doctor wants to have a vacation or he has some work, it's possible to leave the clinic and the business and the profession still runs. The third level is Vedanta. Right? That is another level of skill. The processes and systems are more rigorous. You have multidisciplinary doctors. It's a hospital management, right? It's a complete new level, new scale of business. हर लेवल का बिजनेस एग्जिस्ट कर सकता है और हमारे खुद के एक्सपीरियंस से हमें पता है एग्जिस्ट कर सकता है. बट सवाल ये है कि उसमें उस बिजनेस में आपकी लाइफ का भोग कितना है. हाउ मच ऑफ लाइफ यू आर गिविंग अप टू रन दैट बिजनेस. That is a very big question to ask. I know a lot of people don't think about this question. But in Unnati, we believe life is something that you must live to the fullest, जो भी करना है life में. And you must explore your potential. And that's possible only if you develop yourself. But you can only develop yourself if you have the time. You can only have the time if you have the people. So it's all linked. And I really wanted to say this because I see a lot of business owners जो basically अपना जीवन झोंक रहे हैं business में और सुखी नहीं हैं. I wish I had seen more happy MSME leaders doing what they were doing. We are doing it because we have no choice. We are not doing it because we enjoy doing it. We do it because और कोई रास्ता समझ में नहीं आता, हमने और कोई तरीके नहीं सीखे. So therefore, people management is the backbone of your life. धंधे को छोड़ दो एक तरफ. I think managing people, learning to build a team, learning to retain a team is an essential skill set that you must add to your repertoire today. You must learn how to do it. Otherwise, you're going to be doing the same things again and again and feel frustrated with it. After 30 years, you would have no increase in your skill level, no increase in your business level, and that's never a nice feeling. So let's look at, before I go into, retaining, recruiting and relieving, thoda sa, what is the people landscape? When I say people landscape, I mean talent landscape. When I say talent landscape, iska matlab, आज की जो generation है, and I think this shift has been more pronounced, I think, in the last 5 or 10 years, if I were to talk about it, कि लोगों की mindsets नौकरियों के बारे में, लोगों की mindsets जीवन के बारे में shift हो रही हैं. And therefore, if you are still stuck in the old mindset, the understanding the talent landscape, understanding the people that you need to hire, understanding what strategies you need to have to hire people is going to be very, very difficult. मैं 2-3 examples देती हूँ और मैं इसमें अभी तो, and I will talk about it because I was reading a report from Mercer. Mercer is a big people consulting organization and they regularly publish reports about landscape कैसे change हो रहा है, लोग कैसे differently सोच रहे हैं, employee-employer relationship कैसे change हो रहा है. And I read this fantastic article and I will share it with Akash, and Akash, if you want to share it with the group. After COVID, the amount of resignations and attrition rate that is being witnessed worldwide is alarming. We have never seen such attrition rates earlier. और बहुत interesting लगता है मुझे because जब कोविड था तो हाई थी कि नौकरियां नहीं है, नौकरियां चली जाएंगी, बिजनेसेस कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. And I thought the effect will be the reverse. But actually in COVID times, something has happened and they were trying to analyze कि क्या हुआ है. But they're not really sure. But employees are taking decisions to quit far more easily. They are prioritizing life much more. They are deprioritizing money much more, right? And this shift has been going on for many years. Generation X, Y, Z, जो भी generation आई है हमारे बाद, they are all looking at jobs very differently. And as business leaders, we need to understand that. Because when you hire people, you need to understand जो हमारी next generation workforce में आ रही है, वो नौकरियों के बारे में कैसा सोचती है. आज, and that's my first point, that money is important, but other things are more important. Leisure is more important. Experience is more important. Life is more important. Learning is more important.
it is becoming important that you not only look at money as an employer, but you look at other things, because they are looking at other things. So therefore we need to understand, people leave jobs. I was we consult, and one of our EPOS clients in Bombay, and people are so many interviews. उनके HR head से मेरी बात हो रही थी 2-3 हफ्ते पहले, and she was telling me कि बस लोग नहीं आते, people refuse to take offers because we don't have Saturday off. हम Saturday off नहीं देते, हम बॉम्बे जैसी जगह में बैठे हैं. A lot of people are seeing their friends, they are seeing everybody else, everybody has a weekend off, they need a weekend off. And even when we are paying them more than the market, they refuse to join because they want the weekend off. अब 20 साल पहले अगर आप सोचते ना, ये वाली चीज अनथिंकेबल होती कि कोई यार नौकरी नहीं लेगा क्योंकि भाई तुम सैटरडे ऑफ नहीं देते, राइट? लोगों ये पागल है क्या यार, सैटरडे मतलब क्या है, मतलब नौकरी चाहिए कि नहीं? But now the situation has changed, and after COVID the situation has changed more. People are really prioritizing their life. They want to pursue hobbies, they want to have time for their children, they want to have time for traveling, they want to have time for everything. And therefore understanding this change in dynamic is important as leaders. The second thing that's happening is that flexibility is increasing, right? People have laptops, people have phone, people have the internet. They want to be able to work in a flexible manner. They want to have the flexibility of managing their life and their work also, and therefore you will see a lot of people choose Uber over jobs. I have met Uber drivers who are engineers. I met this fantastic guy who worked with Airtel for 12 years और वो Uber की गाड़ी चला रहा था, 2-3 साल पहले की बात है. And I asked him, I said, भाई, what a choice. And he says, I make more money. That's number one. I make more money at my time. So I decide when I want to start my car. I decide. And in organizations also, in an organization like Airtel, he felt मेरे पास growth नहीं है, right? He says, ठीक है, यहाँ पे भी शायद growth नहीं है, पर at least यहाँ पे मैं कुछ सीख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ अलग से कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और अपना साइड पे कुछ खोल सकता हूँ, पैसा ज़्यादा कमाता हूँ, अपने टर्म्स पे कमाता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी पे कमाता हूँ. There are so many people who prefer to work as Amazon delivery boys rather than sit on a chair. Because the तनख्वाह तो उससे ज़्यादा है. They get 30,000, 35,000 rupees as Amazon delivery boys. They also make in incentives. You also give them tips, right? So a lot of people are making very different choices today. 10 साल पहले लोगों को रुतबे की बड़ी वो चिंता होती थी कि यार मैं डिलीवरी बॉय से काम नहीं करूँगा, मैं ऑफिस में ना कुर्सी में बैठ के काम करूँगा, मैं लोगों को बोलूँगा मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ. I'm not saying there are not people today who think that. There are people like that as well. But the shift is huge. A lot of people don't care today कि मैं लोगों को क्या बोलता हूँ, पैसा कितना मिलता है, flexibility कितनी है. And more younger the generation, the more the shift in this attitude. And therefore, as leaders, we will need to understand this dynamic, and we will need to appreciate this change in dynamic and mindset. The third shift that's happening in the people landscape is no longer employee is at a lower level. अगर मैं employer और employee की relationship देखूं, 15 साल पहले employer always was on the top, right? In your mindset, in everything, in the way they look at you. Today, you are at best at equal terms. Sometimes I think they are on top now, right? Therefore, that shift in mindset you also have to accept, because बहुत लोगों की अभी भी एक लैंडलॉर्ड, एक फ्यूडल माइंडसेट है कि मैं सेठ हूँ, मैं लीडर हूँ, तुम हमारे एम्प्लॉय हो, we will do what we want. This sort of an attitude does not work anymore. Nobody gives a damn if you're a सेठ or not. आज तुम्हारी नौकरी नहीं है तो कल किसी और की करेंगे. They don't care. They are not people who say यार मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो अब मैं 20 साल यहाँ काम करूँगा. Really, they don't care. They will shift for reasons that you will not even be able to understand. Right? मेरे घर से ये ऑफिस है, वो 5 मिनट जल्दी पहुँच जाता हूँ मैं. Therefore, I want to leave my job. Right? So therefore, the relationship between employee and employer has changed a lot. And I think we need to recognize that difference. I think at best, today it's an equal relationship. Sometimes I think, like I said, the employee is on top. You need them more than they need you.
And these shifts is something that you have to shift in your leadership and people management style. So I wanted to start with this before we get into recruit कैसे करें, retain कैसे करें और relieve कैसे करें. Please note down your questions because the questions are in the end, and if you have questions relevant to any specific slide, any specific topic, we can always take that later. So let's look at recruit, retain and relieve. बहुत सिंपल चीज़ है और आई थिंक ये कहीं पे ये 3 शब्द या 3 phrases हम लिख लेंगे. आई थिंक इट विल रियली हेल्प अस कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. रिक्रूट राइट versus best. There is a difference, right? You have to recruit the right person for the job in your organization, not the best. The best may not be the right for you. और मैंने बहुत देखा है एमएसएमई सेक्टर में होते हुए, हम बड़ी संस्थाओं से लोग लेके आते हैं इस उम्मीद से कि यार इसने यार इधर काम किया हुआ, उधर काम किया हुआ है, ये मेरे यहाँ तो मतलब सब कुछ तोड़फाड़ मचा देगा, सब कुछ, मेरे को और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही एक बंदा है, ये मेरे निर्वाणा, यही इसी से मिलेगा मुझे, यही बंदा चाहिए मुझे. You have to understand that the person has to also fit into your system. And a lot of time, large organization people do not fit into small organizations because the system is different. They are used to many different things. The culture is different. The way of working is different. Therefore, don't pursue the best. Pursue the right. And the right is in your hands, right? And we will talk about it. How do you recruit the right person is in your hand. It's not in the external markets. वो आपकी तैयारी पे निर्भर है कि आप राइट बंदा कैसे लेते हैं. रिटेन द बेस्ट. डोंट रिटेन एनीबडी. डोंट रिटेन लॉयल्टी. रिटेन कैपेबिलिटी. सो रिक्रूट राइट, रिटेन बेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीव, बी द बेस्ट. जब बंदा जा रहा है, बी एट योर बेस्ट बिहेवियर. Right, and I'll give you reasons for that. There are reasons why we need to be more careful now, much more than earlier years, when we let people go in our organization, when they go or when we let them go. So recruit right, retain the best, and relieve may be the best. Right, build your brand at that moment. Kachra mat karo. Don't run down everything. Make that moment the best moment for the person, whatever the reason for letting the person go. And we will talk about it. We'll talk about how we can do that. So if I look at recruit, 4 चीजें हैं इसमें. बहुत बार I think Build India में बहुत सेशंस के थ्रू हमने ये मैसेजेस दिए हैं, but I'm going to pick up 4 which are very important for the MSME sector. सबसे पहले तो रिक्रूट करें, खाना तब बनाएं जब चोर की भूख न लगी हो. जब भूख लगती है और कुछ नहीं होता है, आप क्या करते हैं? You eat whatever is available, right? And when you eat whatever is available, you are usually eating the wrong stuff. You're eating potato chips, you're eating Haldiram bhujia, you're eating samosa, which is not good for you. Therefore, when you want to eat right, prepare. And this is the first rule of dieting, and it applies to recruitment. कि proactively recruit करें. अपनी पोजीशन 6 महीने पहले रिक्रूट करना शुरू. पर वो कब करोगे? आप कैसे कर पाओगे? वो जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगा. अगर आपके पास अपनी संस्था का ढांचा नहीं है, अगर आपको अपनी संस्था में क्या रोल्स होने चाहिए, क्या फंक्शंस होने चाहिए, इस फंक्शन में मुझे कितने लोग चाहिए, वो लोग क्या क्या काम करेंगे, अगर इसकी क्लैरिटी नहीं है, आप हमेशा रिएक्टिवली रिक्रूट करोगे. और जब आप रिएक्टिवली रिक्रूट करते हो, यू नेवर रिक्रूट द राइट पर्सन. यू ऑलवेज एंड अप रिक्रूटिंग इन अ हरी, एट अ हायर कॉस्ट, द रॉन्ग प्रोफाइल, विदाउट द राइट डिटेलिंग. जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होता हमारे पास, KPI नहीं होता है हमारे पास, हम 3-4 इंटरव्यूज नहीं लेते हैं, जो बंदा आ जाता है उसको रिक्रूट कर लेते हैं क्योंकि आग लगी है तो कुछ बंदा चाहिए, तब तो वार्म बॉडी चाहिए. यू नीड अ वार्म बॉडी. यार कोई है इस कुर्सी पे बैठा हुआ, फटाफट हायर करो, राइट? Therefore, this is an exercise I urge most MSME owners to do. साल के शुरू में अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाइए.
पेन और पेपर पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाइए, कोई एक्सेल शीट की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस गैजेट्स की जरूरत नहीं है। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, और इसके ऊपर हमने एक पूरा सेशन बिल्ड इंडिया में किया था कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं. सो गो बैक, रेफर टू दो सेशन बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ डिटेल, आई कांट टेक यू थ्रू दैट इन दिस सेशन. बट एक छोटा सा मॉडल अपनी संस्था का, ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं, हर साल एक ब्लूप्रिंट अपनी संस्था का बनाइए कि मेरी संस्था में ये लोग हैं. शुरू करें एज इज से, आज मेरी संस्था में कौन कौन लोग हैं, और उनके ऊपर फंक्शंस का टैग्स डालते जाइए. एक और बहुत अच्छा तरीका इसको करने का है, एक व्हाइट बोर्ड पे पोस्ट इट्स ले लीजिए, जो छोटे पेपर आते हैं चिपकाने वाले, वो पोस्ट इट्स ले लीजिए और लोगों के नाम लिखते जाइए और उनको डालते जाइए. उसके ऊपर छोटे पोस्ट इट्स फंक्शंस के डालते जाइए, और उस फंक्शंस के हिसाब से, बिकॉज पोस्ट इट्स के साथ क्या होता है, यू कैन कीप चेंजिंग इट, राइट. ये आशीष यहाँ नहीं है, यहाँ है, राजेंद्र यहाँ नहीं है, वहाँ है, इस फंक्शन में ये है, इस फंक्शन में वो है. छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में उनके रोल लिखते जाइए. आपको बनाने से पता लगेगा कि आपकी संस्था में गैप्स क्या है, कौन सी रिक्रूटमेंट आपको इस साल जरूर करनी पड़ेगी. बंदे को हायर करने में एमएसएमई सेक्टर में 6 महीने लग जाते हैं. इट टेक्स अ गुड 6 months if you are lucky to hire the right person for your organization. Therefore start early. Start early तभी कर पाओगे जब उसकी थोड़ी सी प्लानिंग कर पाओगे. So एक व्हाइट बोर्ड पे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाइए अगर अभी तक कभी नहीं बनाया तो. और इस, and I think it's a good moment because we have lost 1 year of the year, but we still have 11 more to go, 11 months to go. We have lost 1 month, but we have 11 months to go. तो एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाइए, और इस साल में कौन सी पोजीशंस क्रिटिकल हैं, एम्प्टी हैं, वेकेंट हैं, जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट करना है, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनकी रिक्रूटमेंट शुरू करिए. जब आग लगेगी तब नहीं चाहिए हमें फायर ब्रिगेड, हमें अभी चाहिए, राइट. वी नीड इट राइट नाउ. सो प्लीज डू दैट. सेकेंड, प्लीज नो दैट रिक्रूटिंग पीपल, अपनी संस्था में टीम बनाना आपका हाईएस्ट वैल्यू का काम है. I will take the liberty of, because in EPAD we use the term high value, low value, low value. This is the highest value job that you can do for yourself, for your life, and for your organization. Because if you will have a capable team, if you will have the right team, you will be able to grow and you will be able to live your life. So therefore, इसको prioritize करें. मैंने बहुत सारी संस्थाओं में देखा है बिजनेस ओनर इन्वॉल्व ही नहीं है हायरिंग में. लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आ जाते हैं लोग, चले जाते हैं लोग, कौन इंटरव्यू लेता है, क्या प्रोसेस है, कुछ पता ही नहीं है. Therefore, please prioritize recruitment. And together with that, when you prioritize recruitment, practice the art of interviewing. It's an art. और एक बिल्ड इंडिया में सेशन हमने किया हुआ है इसके ऊपर, जिसमें हमने क्वेश्चंस की लिस्ट भी दी है. Learn how to interview people. और एक इंटरव्यू से मत रिक्रूट करें, एटलीस्ट 2-3 लोगों से मिलवाएं संस्था में लोगों को अपने. एंड इफ यू डोंट हैव सीनियर पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर नॉट एबल टू, यू डोंट हैव अदर लीडरशिप टीम मेंबर्स, अपने पीयर ग्रुप में करवाएं. जो लोग आई लीड में हैं, जो लोग ईपैड कर चुके हैं, जिनकी ईपैड की एक कम्युनिटी है, आई लीड की कम्युनिटी है, लेवरेज दैट कम्युनिटी. अगर हायर करना है, आपको सेल्स का बंदा हायर करना है, मिलवाओ उसको 2-3 लोगों से. Make sure that you have a good process for interviewing people, and make sure you are interviewing everybody who walks into your organization. At an MSME level, you need to meet everybody who is being recruited in your organization, even if for 10 minutes. Even if for 10 minutes. At senior positions, you will have to spend much more time. But interview करने से मैंने देखा बहुत सारे MSME owners की फटती है. इंटरव्यू नहीं करना आता है. आई डोंट नो, ASN, I have this EPADian who just finished his EPAD, I think 2-3 weeks back, and I was speaking to him and he says, मैम मुझे मालूम है मुझे टीम बनानी है, मुझे मालूम है मुझे सेल्स के बंदे लेने हैं, पर मुझे इंटरव्यू करना नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता है इंटरव्यू करने में, कैसे करें इंटरव्यू, क्या पूछना चाहिए, क्या. अरे मतलब इट इज नॉट रॉकेट साइंस. We have taken a session, please go back and read the session. Google has so much stuff on interviewing. You can take courses on interviewing. It is a skill that you must learn. उसमें level 1, level 2, level 3 questions होते हैं, because बहुत सारे इंटरव्यूज कर लेते हैं पर उसमें से कुछ माल नहीं मिलता है, कुछ पता नहीं लगता है कि यार बंदा राइट है कि नहीं.
उसके फादर के बारे में, उसके गांव के बारे में, उसकी गोत्र के बारे में सब पता लग जाता है, पर ये नहीं पता लगता कि हमें इसको हायर करना चाहिए, इज इज गोइंग टू बी अ राइट फिट और नॉट. सो यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, यू नीड टू गो टू द राइट लेवल ऑफ डिटेलिंग, सो दैट यू नो कि बंदे ने एक्चुअली किया क्या हुआ है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या वो आपकी संस्था में फिट बैठेगा, क्या वो आपकी संस्था के वर्क एनवायरनमेंट के साथ काम करके सक्सीड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. These are the two questions you need to ask. Does he know the job, and can he do the job well in my organization, right? ये दोनों सवाल हमें जवाब मिलने चाहिए इंटरव्यू के, और वो उसके लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है. You need to have a list of questions with you. What am I going to ask them? And involve multiple people, multiple capable people in your interview process. Therefore, have your organization chart, prioritize recruitment, and practice the art. And lastly, I know it is a challenge, sourcing right candidates, right? क्योंकि consultants के पास जाते हो, consultants को interest है नहीं, वो लोग सोचते हैं कि यार हमको 10% मिलने वाला है या 8.33% मिलने वाला है, easy positions पे time लगाओ. So they are not willing to spend time with you. But there are many other ways to source candidates. Employee referral schemes launch करो. In your organization, pay your employees to refer candidates to you. It is one of the fastest ways of recruiting. But हम बहुत सारे लोग उसको बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, और उसको फ्री में मत करो, incentivize करो उसको. Employee referrals are incentivized heavily in big organizations also. मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ Danone की. हम एक रिक्रूटमेंट पे बंदे को जूनियर लेवल पे 15,000 रुपए देते थे. मैं 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ. We used to, for every candidate that was hired through a referral, we used to pay the employee 15,000 rupees. So these are ways you need to adopt to strengthen your sourcing network. Because सिर्फ consultant से बात नहीं बनने वाली है. LinkedIn को leverage करें. Most of us are on LinkedIn. Facebook को leverage करें. But through your networks you will get people, and you need to invest time in this. Because I wish consultants would work, but in a lot of organizations, MSME level पे good consultants are not available for you, and therefore a lot of sourcing you need to do. और इसलिए मैं बोलती हूँ कि संस्था में किसी और को रखी ना रहे, एक recruitment person को जरूर रखें. And you don't need somebody who is a senior level recruiter. No, you just need somebody who can coordinate these things for you. जो सही साइट से जाके आपके लिए सीवीज डाउनलोड कर ले, जो थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप पे पोजीशन भेज दे, 10 लोगों को भेज दे, सीवीज मंगवा ले, सीवीज के साथ कोऑर्डिनेट कर ले, इंटरव्यू सेटअप कर ले, फीडबैक दे ले, ऑफर बना ले. These are things you really need if you want to speed up your recruiting. Therefore, hire somebody who can do this for you. Publicize your positions on your WhatsApp group. Leverage करें अपने groups को, leverage करें social media को, अपने employees को leverage करें, employee referral schemes लगाएं, जिससे you can hire people faster, and you can hire the right people as well, because in your circle you will find the right people. So these are the 4 things as far as recruitment is concerned we must do as MSME leaders. अगर मैं रिटेन की बात करूं, if I move to retain next, there are 6 things that we need to take care of, and all of them are important. मैंने बहुत कोशिश करी कि इसको मैं 4 करूं, because I wanted to leave you with less, but I think all of these 6, there's a long list of things you must do, but at least these things are extremely important. सबसे पहले तो किसके लिए हायर कर रहे हैं क्लियर हो जाइए. What is the role that you expect the person to do? Please write a job document. Please make a KRA and KPI. Paper pen से बनाएं. I'm repeating. You don't need fancy gadgets. You don't need fancy apps. But you do need to apply your mind and say, इस बंदे को मैं इस जॉब के लिए हायर कर रहा हूँ, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है. क्योंकि मैंने MSMEs में बहुत देखा है, हम राउंड रॉबिन बहुत खेलते हैं लोगों के साथ. हायर किसके लिए किया था, जॉब क्या दे दिया, फिर 6 महीने बाद उसको चेंज कर दिया, चल ये मत कर, चल तू अब ये करना शुरू कर, फिर उसको वहां से शिफ्ट करके वहां दूसरी जगह लगा दिया. फिर थोड़े टाइम में उसको बोला चल यार तू अब थोड़ा अच्छा बंदा लगा, तो उसको शिफ्ट कर दिया, किसी और अर्जेंट जगह पे शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे बंदा छोड़ के चला गया उसको वहां शिफ्ट कर दिया. अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो वैसे ही हम उसको फुटबॉल की तरह इधर से उधर फेंकते रहते हैं. देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड
that expectations of jobs are changing. People do not like to be moved around. People want to build expertise, and you also want somebody who understands the job and builds on that. इसीलिए please hire people for positions and be clear what is it that you expect from them. दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंस की है, और ये छोटी और बड़ी संस्थाओं में दोनों में इम्पोर्टेंस की है, यंग लोगों को हायर करें और उनको मेंटर करें. There is no substitute for that. Please spend time with your new recruits. और मेंटर मतलब ये नहीं कि 6 महीने में उसकी शक्ल देख ली, नहीं. मेंटरिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम यू कैन लॉन्च. यू कैन हैव अ स्ट्रक्चर फॉर मेंटरिंग. मीट द पर्सन एवरी 1 वीक, सेट अप टाइम विद देम, समझाएं उनको संस्था में कैसे चलती है काम, उनकी चैलेंजेस के साथ डील करें. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में I have an experience that you always do better if you hire freshers. उनको आप अपनी तरह ढाल सकते हो. Cost is not so much of a concern, right? And they don't have a history and baggage. जो senior level के लोग आते हैं दूसरी संस्थाओं से, वो सीखे सिखाए लोग हैं यार. उनको सब पता है कैसे करना है. उनको चेंज करना, उनको अपनी संस्था में डालना बहुत मुश्किल होता है. तो focus on hiring young people. Focus on hiring people with less experience, more mindset of wanting to do work. और पर उन जूनियर लेवल के लोगों के लिए आपको मेंटरिंग बहुत ज़रूरत पड़ेगी. You need to be involved in mentoring those people. दूसरा एक तरीका जो है, जो मेंटरिंग के साथ हम रेकमेंड करते हैं, बडी करिए. प्लीज कनेक्ट टू पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन विद ईच अदर. सो जो नया आया है उसको एक अच्छे पुराने वाले बंदे के साथ लगा के, यार तू इसका बडी है और तू इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. तुम लोग हफ्ते में एक बार मिलोगे, चाय पियोगे, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करोगे. यू विल क्रिएट अ रिलेशनशिप, यू विल क्रिएट अ बॉन्ड. दिस रियली वेरी वर्क्स वेरी वेल. वी डू दैट अ लॉट इन उन्नति. जो नया बंदा आता है वो उसको थोड़ा सा एक कंफर्ट मिल जाता है कि देयर इज समबडी ओवर हियर हु इज लुकिंग आफ्टर मी, हु इज टेकिंग केयर ऑफ माई चैलेंजेस. लैपटॉप नहीं है, सीट नहीं है, पानी कहाँ से लेना है, लंच कैसे करना है. ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं विच क्रिएट अ जोन ऑफ कंफर्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो एक बडी सिस्टम लगाइए कि नया बंदा जो आएगा उसके साथ एक सीनियर बंदे को, थोड़े सीनियर बंदे को आप अटैच कर देंगे और एक छोटा सा सिस्टम लगाएंगे कि यार हफ्ते में एक बार मिलना है, इसके चैलेंजेस के साथ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यंग पर्सन. इट ऑल्सो गिव्स अ सेंस ऑफ प्राइड टू your experienced people in the organization that I am responsible. This person is now under my care, right? और क्रॉस फंक्शनल करिए इसको. तो अगर सेल्स का बंदा है तो सेल्स के बंदे को बड़ी में मत लगाइए, उसको कहीं प्रोडक्शन वाले बंदे के साथ बड़ी में लगाइए. दैट ऑल्सो हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन बेटर, डिफरेंट फंक्शंस बेटर. और थोड़ी सी स्पर्धा कम होती है. एक फंक्शन में आप करते हैं तो स्पर्धा ज्यादा होती है, वहां पे स्पर्धा नहीं करनी है, वहां पे सपोर्ट सिस्टम लगाना है हमको. सपोर्ट सिस्टम के लिए क्रॉस फंक्शनल बडी सिस्टम लगा सकते हैं. एंड दिस इज समथिंग दैट इवन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कैन डू. Unnati is a very small organization. We do this very effectively. This is something that we must implement in our organization. Mentoring का टाइम निकालिए, बड़ी सिस्टम लगाइए, क्योंकि लोगों को टिकाना बहुत जरूरी है. सिर्फ हायर करने से नहीं होता. You need people to stick around. You need people to feel comfortable, right? चौथी चीज as business leaders, connect with your teams. Connect with them in groups, connect with them in functions, talk to them about your vision, talk to them where the company is going. मतलब मैंने देखा है MSMEs की कम्युनिकेशन बहुत 1-to-1 होती है, बहुत टास्क रिलेटेड होती है. You need to connect at an organization level with your people, and therefore we request all of you to do town halls every quarterly. Talk to your team. सबको बुला लो एक कमरे में, शॉप फ्लोर पे बुला लो, कहीं पे एक जगह पे बुला लो जहाँ पे सब लोग आ सकते हैं. एक छोटा समोसा और चाय की पार्टी करो, बात करो धंधे के बारे में, बात करो अपने विजन के बारे में, बात करो चैलेंजेस के बारे में, बात करो उन चीजों के बारे में जो सही नहीं करते हो, बात करो अपने अचीवमेंट्स के बारे में कि ये हमने अच्छा किया इस क्वार्टर में, हमको वी नीड टू डू मोर ऑफ दिस, वी नीड टू डू लेस ऑफ दिस. टॉक टू पीपल वांट टू फाइंड मीनिंग इन देयर जॉब्स, दे वांट टू कनेक्ट विद यू, राइट. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक कम्युनिकेशन का छोटा सा कैलेंडर बनाए, क्वार्टरली अपनी टीम के साथ मिले, फंक्शंस में मिले, सेल्स टीम के साथ डिनर पे जाए, प्रोडक्शन टीम के साथ मिले अलग से,
दिस इज योर हाई वैल्यू टास्क टू कनेक्ट टू पीपल. लोगों को जोड़ोगे कैसे संस्था में? You are the point which is converging all the points. You are the connector for the organization. Therefore, connect, communicate. पांचवी बहुत important चीज, and I think the last 2 months, जिसके साथ भी हम ईपॉस कर रहे हैं हमारी संस्थाओं के साथ, we have been doing performance management, salary, और हर जगह पे almost झगड़ा ही करना पड़ता है हमें, because everybody is used to giving ये 10% इंक्रीमेंट दे दो यार, सबको 10% दे दो, सबको 8% दे दो, सबको 15% दे दो. अभी सरकारी संस्था नहीं है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिस्टम लगाओ, डिफरेंशिएट करो. The worst you can do to a horse is make him feel like a donkey, right? घोड़ा है तो घोड़े की तरह ट्रीट करो, पर पता भी तो चलना चाहिए घोड़ा है. पता कैसे लगेगा? unless you have a performance management system. So please have a simple performance management system in your organization. लोगों की परफॉर्मेंस आपके पास होनी चाहिए क्वार्टरली, आपके पास वो समराइज टैबुलेटेड फॉर्म्स होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि मेरे संस्था में कौन से अच्छे लोग हैं, किन को 15% देना है और किन को कुछ नहीं देना है, किन्होंने परफॉर्मेंस दी है और किन्होंने नहीं दी है. You cannot run private sector organizations like government sector. Even government sector people don't run organizations 10% दे दो यार सबको. वहाँ पे भी प्रमोशन का कोई प्रोसेस होता है यार. पर मैंने छोटी संस्थाओं में देखा है, हमारे को ये समझ ही नहीं आता कि हम परफॉर्मेंस डिफरेंशिएट कैसे करें. वी थिंक इट्स अ पेन यार, कौन करेगा यार परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कौन करेगा यार, इनसे बात कौन करेगा, इनसे फीडबैक कौन कर देगा. अनलेस यू डू दैट, द डोंकीज विल स्टे एंड द हॉर्सेस विल रन. प्लीज रिमेंबर दैट. जो रह जाता है वो कूड़ा रह जाता है, और जो चला जाता है वो अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं. बिकॉज दैट्स द वर्स्ट यू कैन डू. The worst you can do to a good person is to make him feel that he's as or she's as everybody else. But that's not true. In organizations like everywhere else, the normal curve is followed. 10% आपकी संस्था हाई परफॉर्मेंस है, 60% संस्था आपकी मीडियम परफॉर्मेंस है, और 30% जनता आपकी लो परफॉर्मेंस है. ये कर्व आपका फॉलो होगा. बट आपके कौन से टॉप घोड़े कौन से हैं, बीच के कौन से हैं, और जो लेट गो वाले पर्सन लोग हैं वो कौन से हैं, वो जानने के लिए आपको एक सिंपल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लगाना पड़ेगा कि मेरे संस्था में हाई परफॉर्मेंस क्या होता है, व्हाट इज हाई परफॉर्मेंस एंड हाउ डू आई डिफरेंशिएट दैट. और 6 चीज, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट मुझे ऐसा लगता है इट्स एन इन्वेंशन ऑफ श्याम सर. We used to do it as in large organizations as well, but MSME sector में मैंने कभी नहीं देखा ये होता हुआ. But it's a very effective way to retain your good people is leverage your compensation structure. हम हर संस्था में बोलते हैं कि जब आप लोगों को हायर करें और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें, जो आपके अच्छे लोग हैं, प्लीज पुट अ कंटिन्यूटी इंसेंटिव. कंटिन्यूटी इंसेंटिव इज अ रिटेनरशिप इंसेंटिव. इसका मतलब ये आपको अमाउंट 1 साल बाद मिलेगा. जब आप 1 साल मेरी संस्था में टिक जाओगे, you will get a lump sum amount. In all the organizations, we push for a compensation structure which is fixed salary, performance incentive monthly, and continuity incentive annually. This continuity incentive must at least be 2 times monthly pay. तो अगर मंथली पे 10,000 रुपए है, तो उसके साल के एंड में उसको कंटिन्यूटी इंसेंटिव का वैल्यू एटलीस्ट 20,000 रुपए होना चाहिए. अदरवाइज इट डज नॉट मेक एनी सेंस. आप 5,000 रुपए कंटिन्यूटी देंगे, वो भाग जाएगा, फिर भी भाग जाएगा, क्योंकि 5,000 से कुछ इट इज नॉट स्वीट इनफ. सो देर इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्वीटनेस इन कॉम्पनसेशन. उसको बहुत स्वीट नहीं करना है, रूह अफ़ज़ा की बोतल नहीं बनानी है, और उसको बहुत बिटर भी नहीं करना. यू हैव टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ शुगर इन योर कॉम्पनसेशन. सो देयरफॉर थंब रूल हम यूज करते हैं, एटलीस्ट 2 times योर मंथली पे कंटिन्यूटी इंसेंटिव लगाइए. यू विल सी द मैजिक. यू विल सी पीपल विल स्टार्ट मेकिंग एन एफर्ट टू हैंग अराउंड. बिकॉज 3 महीने हो जाते हैं तो उसको लगता है यार 9 ही महीने बाकी, फिर मुझे 40,000 रुपये मिलेगा. वो उसके लिए टिकने की कोशिश करते हैं, वो उसके लिए सेटल होने की कोशिश करते हैं. अदरवाइज दे आर ऑलवेज फाइंडिंग रीजंस टू लीव. और आजकल तो चॉइसेस इतनी है कि वैसे ही रीजंस ढूंढने की जरूरत नहीं है. सो देयरफॉर अपनी कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर को लेवरेज करें. कंटिन्यूटी इंसेंटिव का पोर्शन जरूर लगाएं अपनी कॉम्पनसेशन में.
प्लीज पुट दिस, हम तो सबके लिए बोलते हैं लगाइए, बिकॉज यू विल फाइंड आउट जिसको रिलीव करना है उसको तो वैसे ही रिलीव कर देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज इट डज नॉट एड टू योर फिक्स्ड कॉम्पनसेशन कॉस्ट. यू आर गिविंग इट ओनली आफ्टर अ ईयर एंड यू कैन विड्रॉ इट एनी टाइम. फिक्स्ड कॉम्पनसेशन तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, कंटिन्यूटी इंसेंटिव आप विड्रॉ कर सकते हो किसी भी टाइम. So please consider implementing a structure which is fixed, performance incentive and continuity incentive. Lastly, Samana, yes. Can I interrupt you in between? Sorry. Yes. Yeah, I can have it. Our session time was till 9:40 and 10 minutes for question and answers. So we can extend this by another 10 minutes. So I know it's intriguing and everyone is enjoying. So I think if all the leaders are okay and they are willing to listen, I'll just ask them. So we can continue for 10 or 15 minutes more. It's okay. So I think there was a misunderstanding because I thought it was 1 hour. So I'm sorry, and I did not cross-check. Yeah, 9 to 9:50 and. Okay, and 10 minutes for question. So we have 2 minutes. So I'm just going to quickly wrap this up. As far as relief is concerned, प्रोएक्टिवली रिलीव करें, राइट? गुस्से में आके गाली गलौज करके बहुत टाइम से भुगत के यार अब तो आज तो मैं इसको निकाल ही देने वाला हूँ, राइट? उस टाइम पे आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपका डेकोरम संस्था का सब खराब होता है. देयरफॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू नो हु आर द पीपल यू नीड टू लेट गो और उनकी रिलीविंग की प्लानिंग करनी पड़ती है, बिकॉज रिलीविंग करने के लिए भी कोई बंदा चाहिए उसकी जगह के लिए. और बहुत बार मैंने देखा है क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते हैं, हम डिपेंडेंस बनाए रखते हैं उस बंदे पे कि ये बंदा चला जाएगा तो ये कौन करेगा, इसलिए इसको टॉलरेट करो. फिर एक दिन जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है, हम गाली गलौज करके हम हमारी ब्रांड को खराब करते हैं रिलीव करने में. उसका एक सोल्यूशन ये है कि प्रोएक्टिवली रिलीव करें. रिलीव करते वक्त फर्म होइए बट फेयर होइए. बी फेयर टू द पर्सन. दे वर्कड फॉर यू, द परफॉर्मेंस वाज नॉट ओके, व्हाटएवर द रीजन वाज, please deal with them firmly, but please deal with them fairly, right? तीसरा, it's not personal. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखा है because they own the business, they take it very personally. ये मेरे को छोड़ के चला गया, मैंने इसके लिए ऐसा किया वैसा किया. बहुत स्ट्रेस लेते हैं, देते भी हैं और लेते भी हैं. It is not personal. People will move. People have options. आप उनकी जगह होते तो आपके पास भी options होते. So therefore it is not a personal fight. Don't take it personally. It should not be a stressful situation. It is professional. People will take these decisions to move, and you need to take it in your stride and you need to handle it professionally. और जब आप रिलीव करें लोगों को, जैसे मैं बोलती हूँ, जब कोई लीडर मरता है, कैसा भी लीडर हो, उसको फुल स्टेट ऑनर्स के साथ भेजा जाता है, राइट? ऐसे ही अपने लोगों को ट्रीट करें. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंक्रीजिंगली ट्रांसपेरेंट होती जा रही है दुनिया. ग्लास डोर और पता नहीं कितनी सारी साइट्स हैं जहाँ पे लोग जो चाहे लिख सकते हैं. एंड पीपल आर ऑल्सो इवन ज्वाइनिंग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस. पीपल आर गोइंग ऑन द नेट, दे आर चेकिंग क्या बोल रहे हैं लोग. यार, वी हैव हैड दिस एक्सपीरियंस इन उन्नति आवरसेल्व्स व्हेन वी रिक्रूट बीएस. बहुत सारे बीएस जाके ग्लास डोर में पढ़ के आते हैं और बहुत सारे रिव्यूज हमारे यहाँ ऐसे हैं. एंड वी हैव हैड टू चेंज. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको. वी वर वेरी टफ पीपल. And now when we read feedback, we are saying, यार बॉस ऐसे नहीं कर सकते, you can't do this. We are telling everybody in the organization, बॉस बंद करो, ये मत करो, ये मत करो, don't do this, people don't like this. And therefore go and read what is being written about you. People are writing about you, people are talking about you, and they will do it more and more. And therefore making sure your brand is intact when people leave is becoming very very important. अब वो वाले दुनिया चले गए यार, जहाँ कनेक्शन नहीं था, पता नहीं लगता था क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आज सबको पता है क्या हो रहा है. तुम्हारी संस्था में कौन कैसे बात करता है, सब नेट पर है. Therefore please be sure that you are dealing with your people when they leave very firmly but very fairly. जो भी ड्यू बनते हैं, एक प्रोसेस बनाइए रिलीविंग का. जो ड्यू बनते हैं दीजिए लोगों को. पीएफ का ड्यू, सर्टिफिकेट. डोंट make people struggle for these things. It doesn't help. कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होता है. जाने वाला चला गया. अब सवाल ये है कि मुझे अपनी ब्रांड बना के रखनी है कि खराब करनी है. So therefore relieve proactively. Have a छोटा सा process of relieving.
don't take stress. It's part of the cycle of life. People will come and people will leave. It's not personal. Most of the times it's not personal, right? So that's it. I end my session. I had a small exercise. Ashok sir ने बहुत specifically मुझे बोला था कि भाई we need an exercise that people should go and do. I think the only exercise I have for you is, and I wish I had time to explain this, but very simply, please create a small sheet. I think it's time for increments in most organizations. My request to you is please do not give 10% flat increments in your organization. Differentiate करें अपनी संस्था में कि आपके हाई कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन है, आपके की कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन है और आपके कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन हैं, और उनको मार्केट के हिसाब से पोजीशन करने की कोशिश करें और रेंज बनाएं कि इंक्रीमेंट आप इस कैटेगरी के लोगों को कितनी दोगे, नेक्स्ट कैटेगरी के लोगों को कितनी दोगे. Please create a simulated sheet. Please do not give flat increments. Start differentiating performance in your organization today. So that's something that I think most of you can do. If you need any help, please reach out to us and we can help you in whatever way we can. Yes, I can take questions now. I'm going to stop sharing my screen. I invite all admins and visitors to ask the questions. Please raise your hand. Yes, leader Ronak. I can have a song, ma'am. I can have Ronak. One question which I really want to know, even after providing the so-called continuity incentive, people leave immediately after that. Rather, they wait for that continuity, factor. They know that they're going to get it on maybe Diwali or maybe the financial ending, and then they have their own plans. So it's sometimes difficult. I'm just everybody has their own plans, Ronak, and this is, like I'm saying, this is part of the life cycle of life, right? But थोड़ा data निकालो रोनक कि कितने लोग गए, because हम एक दो data points को पकड़ के भी बहुत उसको we try to find the evidence that we are looking for, right? People will leave for sure, but the good part is that he stayed for 1 year, right? So at least that is a good part, right? There was some continuity in the job, right? There was some continuity, and you will find there will be some people who will stay back. तो कितने लोग छोड़ के जाते हैं, कितने लोग नहीं छोड़ के जाते हैं, क्या कारण है, वो तो देखने ही पड़ेंगे रोनक. So I'm not saying that it is रामबाण तो कुछ भी नहीं है, काश होता, पर नहीं है. But this is something that helps people settle down. This helps give you a little bit of longevity. In Unnati, we have this very interesting, Neeru was talking to me yesterday. And everybody in Unnati knows this. We have this 3 days, 3 months, 3 years. Most of the people will run away in Unnati in 3 दिन. ये समझ आएगा, बॉस यहाँ नहीं दाल निकलेगी, बॉस यहाँ नहीं होता काम, right? So they're too tough or they're too whatever. जो लोग 3 दिन की रेखा पार कर जाते हैं वो 3 महीने रह जाते हैं, और बहुत सारे लोग 3 महीने जब पार कर जाते हैं तो 1 साल 3 साल रहते हैं, right? So also रौनक, it is a puzzle. इसको ना बहुत जगह से देखना पड़ता है. Continuity incentive cannot solve all your issues. So for example, if you have top performers, if you know who are your top performers, और उनका कंटिन्यूटी इंसेंटिव का पे आउट आ रहा है, 2-3 महीने से पहले अपनी फील्डिंग जमानी शुरू करो. टॉक टू देम, क्या हो रहा है, व्हाट डू यू वांट, लर्निंग की कितने एवेन्यूज है, ग्रोथ के कितने एवेन्यूज है. आपको पता होना चाहिए रौनक कि वो छोड़ने की सोच रहा है कि नहीं. इट शुड नेवर बी अ सरप्राइज टू यू, एंड यू शुड बी एबल टू डू समथिंग अबाउट पीपल यू वांट टू डू समथिंग अबाउट. बाकी तो जो जा रहा है वो जा रहा है. बट रौनक, आई वांट यू टू टेक आउट योर डेटा एंड सी हाउ मेनी पीपल हैव लेफ्ट आफ्टर कंटिन्यूटी इंसेंटिव. I'll do that. Yeah. Also, the exit interview is must now, I think. Absolutely, exit interview भी करने चाहिए. पता लगता है because जितनी संस्था बड़ी होती है रौनक, आपका जो कनेक्ट है वो वीकर होता चला जाता है. तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रहा है, संस्था में क्या हो रहा है, sometimes you listen to things which say, अच्छा यार हमारी संस्था में ऐसा होता है, अरे हाँ यार हमारी संस्था में ऐसा होता है, right? So it's a very good way to know your organization, but sometimes I think exit interviews is a little too late. इसीलिए अपने टॉप परफॉर्मर्स को, अपने सॉलिड परफॉर्मर्स को कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रखो. यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग विद देम, एंड देयरफॉर पीपल लीडरशिप इज अ फुल टाइम जॉब. संस्था बनाना इज अ फुल टाइम जॉब. ये नहीं है, पार्ट टाइम नहीं है कि हफ्ते में 2 बार कर लिया और हो गया. इट डजंट वर्क. Thank you, ma'am. I can have it. I can have it. Yes, leader Joel ji.
Continuity bonus should be a part of the total offering, or should it be additionally announced once the person joins? No, it should be part of your offer. We make it part of their offer. क्यों joining के time में yes अगर sweeten करना ही है deal को तो join करने से पहले sweeten को deal करो ना, make it sweeter when they are joining. Because a lot of, at least I don't know what is your rejection ratio, but MSME में offer to joining ratio is also very weak. हम बहुत सारे offers देते हैं पर joining नहीं होती, right? हमारा ये experience है and this is the market. So it's also a good way to sweeten the deal before the joining and improve the offer to joining ratio. Thank you, Joel. Request leader Raju Kapasi. Yes, I can have it. Raju. I can help Raju bhai. Keep Joe. Very nice, thank you. Good to see you. Yes. So first of all, gratitude for this session, because in this year I have introduced as Shyam sir is saying, like in the same manner, I have introduced the concept of this as a performance behavior. So question is all about because I'm into this journey and I'm absolutely coming up with this new. So should we be in touch with the employee in terms of expectation versus outcome and their income? So with this three. I think I understand your question कि employee से expectation पूछनी चाहिए कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हो राजू भाई? हमारी expectation उनको होनी चाहिए और उनकी भी हमें मालूम होनी चाहिए, जिससे एक दूसरे की क्लैरिटी बढ़े, so that we can move together ahead. तो राजू भाई उसमें I know what you're saying, but मेरा मत उसमें ये है कि एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन और आपकी एक्सपेक्टेशन दोनों सब्जेक्टिव चीजें हैं, राइट? सो आई कैन एक्सपेक्ट द मून, राइट? दैट डजंट हेल्प, राइट? मैं हमेशा मार्केट को बेंचमार्क करती हूँ. सो आई थिंक मार्केट इज अ बेटर बेंचमार्क. एंड व्हेन आई से मार्केट आई मीन, राजू भाई देखो, हमें मोटा मोटा पता होता है कि अगर ये बंदा छोड़ के जाएगा तो इस बंदे को मार्केट में कितना तनख्वाह मिल जाएगी. Exactly. या अगर मुझे ऐसा बंदा हायर करना है तो मुझे कितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी हायर करने की. सही. ये हमें मोटा मोटा पता होता है. You can be off by 2,000, 1,000 rupees, it doesn't matter. And if you अगर 2-3 लोग दिमाग लगाएंगे इसमें लीडरशिप लेवल पे, तो जनरली यू कम टू अ वेरी गुड नंबर. कि यार ये जो बंदा है ना, इसको इतना मिल जाएगा मार्केट में, उसको हम मार्केट पोजिशनिंग बोलते हैं. और हम सारी संस्थाओं में जहाँ पे भी हम ई-पॉज कर रहे हैं राजू भाई, एंड दिस इज द टाइम एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस, वी मेक द लीडर डू द मार्केट पोजिशनिंग फॉर एवरी एम्प्लॉय. अपने सब एम्प्लॉय की मार्केट पोजिशनिंग करिए. सो मार्केट पोजिशनिंग हमें 3 लेवल पे करते हैं. क्या इस बंदे को तनख्वाह मार्केट से ज्यादा मिल रही है, या मार्केट के लेवल पे मिल रही है, या मार्केट के नीचे मिल रही है. इन तीनों क्वाड्रेंट्स में अपने लोगों को डालें. वेरी गुड. और उसके साथ परफॉर्मेंस मैप करें. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2 people who are at the same performance level, but एक की तनख्वाह एंड सेम पोजीशन, और एक की तनख्वाह फॉर एग्जांपल 50,000 है विच इज ओवर द मार्केट, और एक की तनख्वाह 20,000 है विच इज अंडर द मार्केट, यू विल गिव मोर इंक्रीमेंट टू द पर्सन हु इज अंडर द मार्केट. क्योंकि आप उसको उसके लेवल पे आप उसको उठाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा उठाएंगे, सो दैट इट कम्स क्लोजर टू योर मीडियन सैलरी. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. अगर आप अपने सारे लोगों का नाम लिखेंगे एक लिस्ट में और उनकी मार्केट पोजीशनिंग करने की कोशिश करेंगे कि ये मार्केट में अगर जाएगा तो इसको इससे तनख्वाह ज्यादा मिल जाएगी कि मैं इसको ज्यादा दे रहा हूँ. I think you are right, very rightly said, because I have done little bit on those area. एक छोटा सा एग्जांपल, मेरे पैकिंग डिपार्टमेंट को मैंने एक्सपोर्ट के एंगल से थोड़ा सा नया मोड बनाया. Earlier we were been paying for them around somewhere around 12,000 something, but the market is somewhere around 18,000. Yeah. 16, 17, 18. So I bring them around 19, 18, 19. So now they have a choice to be retail with me, because they are trained, that's around 10 years मेरे साथ जुड़े train है.
तो अब मैंने वो लेवल मैच कर दिया, तो आई गेट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं कहीं और नया भी लाता हूँ, तो अब ये बंदे के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, नए भी ला सकता हूँ और ये भी रिटर्न हो सकता है. सो आई थिंक दैट्स समथिंग आई डिड. आई थिंक यू आर अलाइनिंग द सेम कॉल. एब्सोल्युटली. तो मार्केट के साथ कंपेयर करें. एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन सब्जेक्टिव है, आपकी एक्सपेक्टेशन सब्जेक्टिव है. मार्केट जनरली इज वेरी बैंग ऑन, यू विल नो. Yeah, and thank you very much. And one good thing you have shared with that, we can take an interview with our eyelid, जैसे हमारा ग्रुप्स है उसी के साथ भी हम लोग कर सकते हैं. That's something very good idea. I would definitely apply on. Thank you. I think it's great. You must leverage your network. Because we leaders are all aware, our conceptually we are very clear, all leaders. Absolutely. So if we can hire someone on behalf of something, and we can give a fair feedback rather than one side or feedback. So we have Absolutely. a mirror feedback. Absolutely. Beautiful idea. Really love it. Thank you. Implement करें. Okay. Thank you, Raju bhai. We'll take leaders' last questions. Other leaders, please put your question in the chat box. Leader Ankit. I can I will, ma'am. Ankit. I wanted to ask how to relieve someone in a key position in case he doesn't wish to leave. He doesn't wish to leave. Okay. Yeah. All right. So basically, you want to fire somebody. Yeah. Okay. Gracefully. Basically, you want to fire somebody. So, how to, matlab, I don't know what the challenge is. You Challenge fire is fire somebody. he's very satisfied. Sure, with you his are work, not. but I am not. Yeah. But I am not. And since he is in a key position, he has some sensitive information about my firm. He may later misuse that. So that is the fear in my mind. भाई देखो ऐसा है, जो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में और दिल में है उसको निकाल नहीं सकते. ठीक है. जहां तक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यूज करने की बात है यार, आई थिंक वी ओवररेट दिस थिंग. दिस इज लाइक अ घोस्ट इन द रूम दैट यू हैवंट ओपन, राइट? सो अगर मिसयूज करेगा तो तैयारी रखो उसकी मिसयूज की. क्या कर लेगा यार, मतलब क्लाइंट्स के पास पहुंच जाएगा. तुम प्रोएक्टिवली उसकी प्रिपेयर करो. So if you proactively prepare for it, Ankit, you will still have some damage. Yeah. But the question is, can you minimize that damage? So for example, if he's a sales guy, right? And he knows your customers, you must prepare for his exit in a way that your customers are informed कि boss ये बंदा जाने वाला है. Please do not connect with this person. This person is not part of my organization. उसके जाने से पहले बात करना शुरू करो अपने की क्लाइंट्स के साथ. हम प्रिपेयर नहीं करते हैं. हमें 1 day to 2nd day की बंदे को छोड़ना है. That doesn't work. That also works. It comes with its own risks. But if you prepare for it today, you are very clear कि this person is not for me. मुझे नहीं चाहिए ये बंदा. अब कौन सी इंफॉर्मेशन है उसके पास, वो कैसे उसको मिसयूज कर सकता है, बैठ के सोच ले यार. और उसके बाद भी कुछ मिसयूज तो होगा, अंकित. I want that person to hand over responsibility to his successor also. So I can not just fire him. Difficult. वो करेगा हैंड ओवर, वो अपने तरीके से हैंड ओवर करेगा. मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि जो नॉन परफॉर्मर्स हैं, डोंट लेट देम हैंग अराउंड इन योर ऑर्गेनाइजेशन. ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है अंकित कि वो अच्छे से हैंड ओवर करके जाएगा. क्यों जाएगा अंकित? तुम उसको नौकरी से निकाल रहे हो यार. इतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं है इंडिया के एम्प्लॉय क्लास में कि वो तुम उसको निकाल रहे हो तो भी वो तो अच्छे से हैंड ओवर करके जाएगा. कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार? ये सूरज बरजादा की मूवी थोड़ी है. This is not a movie. This is never going to happen. The new person will have to start from scratch. Yes, you will train the new person. You will train the new person. वो पुराना बंदा जिसको आप एग्जिट कर रहे हो वो कुछ नहीं करने वाला है अंकित. That is the reality. तो ये ख्वाबों की दुनिया है कि वो उसको हैंड ओवर करेगा, नहीं करने वाला है. आप इतना इंश्योर करो कि आपकी संस्था के डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप में मेल्स, कम्युनिकेशन थ्रेड्स, ये आपके पास होने चाहिए. बिकॉज ये भी हम हैंड ओवर नहीं लेते. उससे उसका सामान ले लो. टेक द इंफॉर्मेशन दैट ही हैज फ्रॉम हिम. कैन यू डू दैट? दैट्स इनफ. Okay. Right? Don't expect कि वो बैठ के वो नए बंदे को अब सिखाएगा कि बॉस तू ये करेगा, तू ऐसे करेगा. It's not going to happen. But जो भी information files, material उसके पास है अंकित, that should be handed over to you. For sure.
बाकी जो उसके दिमाग में जो दिल में वो लेके जाएगा, मिसयूज करेगा, उसकी तैयारी रखो, उसके लिए प्रिपेयर करो, प्रोएक्टिवली डील करो. And one more question, ma'am. Yes. I'm already paying a few employees higher than the market grade. Yeah. But like previous years, every year they expect a little bit of rise. Sure, why not? So, pardon? Sure, why not? तुम दे रहे हो, मैं ले रही हूँ, एक्सपेक्ट करने में क्या जाता है? But I am already paying them above market grade, so I don't want to increment them further. So shall I convey to them? That means that performance is not very good. Yeah, not that much. So performance नहीं है और आप पे दे रहे हो. What are you doing? And again they are expecting more because I've been already giving them. Of course, तुमने आदत डाली है यार मुझे. Yeah. तो परफॉर्मेंस नहीं है, आप पैसे दिए जा रहे हो और आप एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि यार देयर एक्सपेक्टिंग. अरे यार तुमने आदत डाली हुई है. Why is performance not pay not linked to performance? So how to reverse engineer it? कम करो इंक्रीमेंट इस साल. And be prepared that they can go. Exit की तैयारी रखो, exit की prepare करो. If they are not performing, you are only going to increase your wage bill. And trust me, performance is only going to keep coming down. ये बढ़ने वाला नहीं है, ये कम होता जाएगा. I can have it, ma'am. Yes. Okay, yes, ma'am. I just thank you all the visitors for asking the questions, and I request Leader Arjun Patil to take the session forward. Just a single request to Sama ma'am. Thank you very much for coming, ma'am. I just request you to repeat that question or activity what we have to do again. It's okay. So I'm going to repeat that question. I just need one minute to share my slide, Ashok sir. So basically, I want you to map your employees in this grid. एक तरफ कंट्रीब्यूशन प्रोफाइल है और एक तरफ मार्केट की पोजीशनिंग है. आपकी संस्था में हाई कंट्रीब्यूटर, की कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूटर कितने हैं और वो मार्केट के हिसाब से कहां पर हैं. Does that make sense? Yes, no, maybe? Yes, ma'am. Okay. All right. You can take a picture of this. And Leader Akash will circulate the same thing into the group, so don't worry, don't write. The same format will be circulated in the groups. All right, cool. So Ashok sir, this is time for increments. My request to you is please do not give Sarkari style 10% increments. Please differentiate performance. Thank you, ma'am. Sure, Because, ma'am. I know every word of someone, ma'am, every line is very relevant and very connecting. But I have to due to time limitations, so we have to end here. So on behalf of Dr. Eileen Eclavia, I thank you, Sama ma'am, for spending his busiest time today